સુરતના કઠોદરામાં આચાર્યની બદલીના વિરોધમાં ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓને ભડકાવનારા 8 વાલીઓની ધરપકડ કરાઈ છે। માસૂમ વિદ્યાર્થીઓને ભડકાવાયા હતા અને ત્યારબાદ રસ્તા પર સૂત્રોચ્ચાર કરાવાયા। વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એક મેસેજ કરી વાલીઓ ભેગા થયા હતા અને હંગામો કરતા ષડયંત્રની આશંકા હતી, જેને લઈને જ આ કાર્યવાહી થઈ છે। ડમી સિક્યોરિટી કૌભાંડમાં વાલી મંડળના 2 સભ્યની ધરપકડ કરાઈ હતી। સુરતના કઠોદરા વિસ્તારમાં જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને સાથે રાખીને આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું, સ્કૂલ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા। એવા 8 જેટલા વાલીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આપણી સાથે ડીસીપી આલોક કુમારજી मौजूद છે। સાહેબ, શું ઘટના હતી અને કઈ રીતની કાર્યવાહી? बेसिकली पूरी घटना ऐसी थी कि स्कूल में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 3 सिक्योरिटी के लोगों को लगाया गया था और इसमें 2 टोटल फॉर्जरी का मामला सामने आया। जो स्कूल की समिति है, उसके जो शासन अधिकारी है, उसके तरफ से हमें कंप्लेंट मिला कि 3 सिक्योरिटी गार्ड में से सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा रही है और वो जो वाउचर फेक वाउचर बना के फॉर्जरी करके वो पैसा उठा रहे हैं और इस तरह से 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा सरकार का पैसा उन्होंने ले लिया। इसके बेसिस पे हमने एक फरियाद दाखिल की और फॉर्जरी का सेक्शन लगाया और इसमें जो भी आरोपी थे उनकी अटक की। अगले दिन ऐसा हुआ कि स्कूल के बाहर जो आपने भी देखा और हमने देखा कि बच्चे जो है वो रोड पे नारेबाजी कर रहे थे और वाली जो है वो भी उनको चढ़ा रहे थे और वहीं पे खड़े होके उनसे नारा लगवा रहे थे। तो ये मामला बहुत गंभीर था, संगीन था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर हैं और बच्चों को ऐसा हथियार बना के जो जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनको फ्यूचर है इस देश का, इस राज्य का, उनको हम इस तरह से गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकते। इसलिए हमने इसमें भी जो अनलॉफुल असेंबली है, राइटिंग है, इसके बेसिस पे फरियाद दाखिल की है। हमने टोटल 8 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें वाली समिति के 2 लोग हैं और 6 वाली है और इसमें 2 महिलाएं हैं और टोटल 6 पुरुष हैं 8 लोगों में से। और ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आपको प्रदर्शन करना है, आपको विरोध करना है, आपको कुछ रजुआत करनी है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी सब बैठे हैं यहाँ पे, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। आपको जो भी रजुआत है आप वहाँ कीजिए, लेकिन बच्चों को एज अ वेपन बना के रोड पे उतारना ये गलत बात है और इस पे पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। જોઈ શકાય છે બાળકોને હથિયાર બનાવીને જે રીતે રસ્તા રોકો આંદોલન કરાયું હતું અને જે શિક્ષક હતા એને પરત લાવવા માટેની માંગ કરવામાં આવી, પરંતુ એમાં વિદ્યાર્થી નાના માસૂમ ભૂલકાઓનો ઉપયોગ કરાયો હતો। એ બાબતને લઈને પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે। 8 જણાની ધરપકડ કરી છે। કેમેરામેન રાકેશ પાનવાલા સાથે ધનરાજ બાગલે, એબીપી અસ્મિતા, સુરત।